I welcome you once again in English class. Today we will start new unit, that is unit number 2. The name of the lesson is determiners. First of all, before we start this unit, we should know what is a determiner. A determiner is a word which is placed in front of a noun to specify the quantity or to clarify what the noun refers to. एंड डिटरमाइनर नाउन के पहले लगता है जो क्वांटिटी बताता है और या तो नाउन किसको रेफर करता है. सो दैट इज डिटरमाइनर. देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स. आर्टिकल्स, यू आर मच फेमिलियर, ए एंड द. क्वांटिफायर्स, सम, फ्यू, लिटिल, मेनी, मच. That tells about the quantity, how much. Next one is possessives. It refers what the noun belongs to, like my, your, his, her, their. Last one is demonstratives. This, that, these, those. So we will do all the worksheets and we will see how they are used in different worksheets. So now we are going to start the unit. Here what is written, worksheet number 1. You have read in B.2 the tale of a tale, unit growing up of my English reader. आपने पढ़ा है that Swami and P had a fight. स्वामी और P के बीच में लड़ाई हुआ था. Now that Swami has realized that he is wrong, he is preparing an egg carton jewelry box to give to his friends. उसे एहसास हो गया कि वो गलत था, इसलिए वो अपने दोस्त के लिए एक कार्टन ज्वेलरी बॉक्स तैयार कर रहा है देने के लिए. रीड द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर मेकिंग द सेम. इसको आप पढ़िए, कैसे इसको बनाया जाएगा. प्रोसीजर दिया गया है. एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द एड बॉक्स. सो वर्ड्स आर गिवन इन द एड बॉक्स. यू कैन क्लियरली सी हियर. अ फ्यू, सम, अ लिटिल, मेनी, a lot of, a and, several, each. So we are not going to start. This box is an interesting way to store your treasure. Materials to be used: some newspapers and a carton, some cardboard, a little foam, a few paint brushes, some photographs, a few ribbon pieces, many imitation jewels. And last line is a lot of cotton balls and some glue. So these are the materials that are used, and we have used different types of determiners according to the number. Now we will move to the next page, that is page number 11. Instructions are given here. Spread the newspapers over a large work surface. Paint the entire egg carton with some poster paint and let it dry completely. Decorate the outside of the carton with a few ribbons and many jewels. You could even paste some photographs of several friends. Number 3, put a little glue at the bottom of each egg section. Then put a cotton ball in each one. The jewelry box is ready. The words you have filled in the blanks are determiners. Now read some of more determiners. So you have to go through all these. Now we'll move to the next worksheet, that is worksheet number 2. Here work with your partner. Fill in the blanks with appropriate determiners in the comic strip given below. So you have to fill in the comic strip by using appropriate determiners. There isn't enough
salt in it, or you can write any salt in it. You are right, mom. We need to add some salt, a few herbs, and little or a little oil. Lovely. And then we can have chips with it. Chips? Mom does not keep any chips at home. Now here some of the determiners are given where we have to use. First one is lot, a lot. ये कब यूज होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ, जैसे ए लॉट ऑफ बुक्स, ए लॉट ऑफ शुगर. नेक्स्ट वन इज फ्यू, आ फ्यू. वी यूज़ ओनली विथ काउंटेबल्स, सिर्फ काउंटेबल्स के साथ यूज करते हैं. टू स्पेसिफाई नंबर, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स. नाउ वी यूज़ लिटिल, अ लिटिल विथ अनकाउंटेबल्स जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं. टू स्पेसिफाई क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल मिल्क, a little hope. We use enough with countables as well as uncountable nouns. For example, I haven't got enough money. There aren't enough sandwiches. Also, few and little are almost negative in implication. ये नेगेटिव सेंस के लिए हम लोग लाते हैं. बोथ ऑफ देम सजेस्ट नन, यानी दोनों का मतलब है कुछ भी नहीं. जैसे फ्यू फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स. लिटिल होप, ऑलमोस्ट नो होप. सो दिस वाज वर्कशीट नंबर 2. Now we'll move to worksheet number 3. Lina, her brother Daksh and their daddy are in the zoo. लीना और उसका भाई दक्ष और उन लोग के डैडी जू में हैं. लीना इज़ वेरी एक्साइटेड, लीना बहुत एक्साइटेड है. सो सी जस्ट कैन नॉट स्टॉप चैटिंग विथ हर फादर. इसलिए वो अपने पिता से बात करने से अपने आप को नहीं रोक पाती है. वाइल कन्वर्सिंग, बात करते समय, दे फॉरगेट सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स वो भूल जाते हैं. अब आपको करना क्या है, कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन लीना एंड हर डैडी. लीना एंड डैडी के बीच जो कन्वर्सेशन है उसको कुछ वर्ड्स के साथ भरना है आपको. लीना, it's great here, Dad. Look at the white rhinos over there. Yes, Dad is saying. They are from Africa. There are only 29,000 rhinos left in the world. Daksh, Dad, I am thirsty. मैं प्यासा हूँ. Is there some lemonade left in that bottle? No, there isn't any. But there's a little water. Oh, Daksh, forget about the lemonade. Lemonade means the mixture of lemon juice. Dad, are there any ostriches here? Dad, I am sure there must be some, or you can say a few on the other side. Daksh, I am hungry. Is there any chocolate in the bag? No, there isn't any. Now Lina is saying, Daksh, have you come here only to eat? क्या सिर्फ तुम यहाँ पे खाने के लिए आए हो? दक्ष, दिस जू इजंट वेरी गुड, उतना अच्छा नहीं है ये जू. देर आरेंट एनी माइस और रैट्स और स्नैक्स, इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स. दैट, ओह दक्ष. So this was the conversation and we have completed by using different types of determiners. So for today, this is the worksheet we have done. We'll meet in the next class.